आज ही हमने एक पहली वीडियो बनाई थी मिन हीप की, ये वो वीडियो है। अब मैक्स हीप भी करना है हमने, तो ये सब कोड दोबारा कौन लिखे। वैसे ये वीडियो काफ़ी छोटी होगी क्योंकि हम ज़्यादातर कोड कॉपी कर रहे हैं और स्लाइड चेंजेस लाने और मिन हीप को मैक्स हीप में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर रेफरेंस मिन हीप का प्रिंट ये हुआ था, हमने 0, 50 और 20 ये इस तरीके से इंसर्ट किया था और प्रिंट हुआ। आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ये रहा। अब इसको हमें अगर मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली अगर हम इवन नेम्स भी नहीं चेंज करना चाहते तो भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं ज़रा पॉइंट्स मार्क कर दूँ, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ये जो पॉइंट्स मार्क किए हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, चेंज दिस साइन टू दिस साइन। हम बस इतनी सी चीज़ कर लेना तीनों जगह, तो हमारा ऑटोमेटिकली ये जो प्रिंट होगा या ये वाला जो प्रिंट होगा, ये वाला अभी थोड़ा कमेंट आउट कर देते हैं। हालांकि ये चल जाएगा पर पहले हम इंसर्शन पे ध्यान देंगे। तो बस इनको, इस साइन को अगर हम चेंज करेंगे इससे तो हम इसको मैक्स हीप बना सकते हैं। 2 हो गया और अब यहाँ पे हमें ऑपोजिट करना है, सॉरी यहाँ पे ये था, इसको हमें ये करना है। तो let's dry run this code. Let's see what we would get. So first we are inserting 50, next we are inserting 20, so it would be 50 20 because the maths heap follows descending order, 50 and 20. Then it would insert 0 and it would check 50 20 and 0. I think that would be the answer, 50 20 and 0. But this seems to be quite convenient as there are no swapping there. Let's change it a bit. Let's put this. What do you think? I think let's just see what it. Okay, so 200 came first because of swapping, and then 0 and then 50. So we can change this to largest. This is all like just naming. We can avoid this also. We are already done with Max Heap. We can all just leave and we'll be on our way. Okay, so here, anywhere else? No. So this smallest will be largest. Although the code I have handwritten it in the previous video, you can all check it, and I will also link it in the description or in the comments. Let's run it one more time. Okay, 15th line. Okay, yeah, that's naming just. We will also run the delete function. So when we delete it for the first time, we expect what do we expect? Well, I expect 200 and 0 to be there. Let's see what we get. Okay. So we are getting something quite different, even though this is correct code. And why it is correct? Because when we are building it, we are getting the same thing. That's how we can check. So first we would get 0, then 50 0, and then 200 0 50. So
50 0 and 50 0. If I do del heap again, we would get 0 in the end. See, now see, this way we can also make star patterns and all that, but star patterns are very easy, and why do we won't use this kind of things for star pattern. My C++ extension is something. Yeah, that's it for the Max Heap. Hope you liked it.